Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Elawat, and we are doing the chapter 2, the microbial world. So far, dear students, we have talked about the useful effects of or the beneficial effects of microorganisms to human beings. We know that microorganisms serve as or they help in preparing several food items like idli, dosa, isn't it? And they're also helpful in preparing the medicines. Right? They also help us in killing the other microorganisms. Okay? Yes? Yes. So that chemicals are called as antibiotics. What do we call those chemicals? Antibiotics. What are antibiotics, dear students? Tell me what is antibiotic? See, we have discussed that microorganisms help us in preparing certain chemicals. And those chemicals, with the help of those chemicals, we can kill other microorganisms. So those chemicals are called as antibiotics. So antibiotics, we can define antibiotics as the medicines that kill or stop the growth of disease causing microorganisms. ये कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसी केमिकल्स हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड वेयर डू वी यूज दीज एंटीबायोटिक्स? We use it to kill other microorganisms, and you can see in the picture. These pictures show you the photos of antibiotics. Now, dear students, penicillin was the first antibiotic. ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी. अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने बनाई थी, एंड इट डिस्कवर्ड इट्स इफेक्ट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. So what are antibiotics? Antibiotics are medicines that kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. Now let's see the action of antibiotics. Means how does antibiotics act? How does antibiotics help us? So most of the antibiotic, dear students, they destroy the cell wall of bacteria. बैक्टीरिया जो होते हैं उनके सरफेस पर सेल वॉल होती है बेटा. जस्ट लाइक दी प्लांट सेल्स दे हैव अ सेल वॉल. सो जो एंटीबायोटिक्स हैं ये उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल वॉल दे आर नॉट एबल टू डिवाइड एंड ग्रो. तो उनकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू ग्रो. सो एज यू कैन सी द प्लान ऑफ एक्शन, सी एंटीबायोटिक दे विल अटैक on the bacterial cell wall, they will destroy the bacterial cell wall, right? And because of the destruction of the cell wall, the bacteria will not be able to divide, it will not be able to grow. Okay, so this is our our microbes, and this is our antibiotic, the superman antibiotic. Okay, अब जो antibiotics है बेटा, different antibiotics have different modes of action, right? बहुत सारा अलग अलग तरीके होते हैं एंटीबायोटिक्स के एक्ट करने के. दे एक्ट ऑन डिफरेंट वेज एंड रिजल्टिंग इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. और उनका नेट रिजल्ट होता है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं. राइट, दे किल द बैक्टीरिया. क्लियर? ओके, राइट. नाउ कमिंग टू दिस, अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द antibiotics, we use another technique which is called as vaccine. कुछ ऐसी diseases होती हैं जिनके against हमको vaccine दी जाती है. Like, have you heard about it? Yes, like polio vaccine. Okay. So what is vaccine? देखिए, as you can see in the picture, can you see in the picture? We are using an injection. A doctor is using an injection killing the microbes, right? Yes. So वैक्सीन जो होती है बेटा ये लिक्विड फॉर्म में होती है. वैक्सीन इज अ लिक्विड फॉर्म, और इस लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या होता है, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं, एंड देन दे आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट द डिजीजेस. देखिए, हम वैक्सीन का मतलब होता है एक लिक्विड सस्पेंशन जिसके अंदर इनएक्टिवेटेड माइक्रोब्स हैं या किल्ड माइक्रोब्स हैं, and this suspension will be given to the living organism. Now when this suspension will be introduced into the body,
then our immune system will identify and it will start killing those microorganisms, right? Okay. So some of the diseases against which this vaccination is used is cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis and even polio. है ना, हम पोलियो की वैक्सीन लेते हैं ना बेटा, पोलियो वैक्सीन. Yes. And it was, the vaccine was discovered by Edward Jenner against the smallpox. तो सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी, that was for smallpox in 1798. So there are two ways of, saving us from the diseases. One is vaccination or giving vaccine, and second is antibiotics. Now what happens when we get the vaccine and what happens after the vaccine? देखिए, जब हम वैक्सीन देते हैं किसी healthy body में या किसी person को, so when a vaccine is given to a person at an early stage, in the beginning, बहुत starting में, so the body will start producing the antibodies. Antibodies जो हैं, ये हमारे immune system के soldiers हैं जो fight करते हैं microbes से, right? हमारा इम्यून सिस्टम है. इम्यून सिस्टम बेटा वो सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है. सो इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, जब हमें वैक्सीन मिलती है, सो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है. और एंटीबॉडीज जो है, दे फाइट विद माइक्रोब्स. और दे किल माइक्रोब्स. तो ये माइक्रोब्स को किल कर देते हैं. ओके, ठीक है. सो जब हम किसी पर्सन को वैक्सीन देते हैं तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं. सो इनिशियली ये रिस्पांस होता है बेटा, ये बहुत वीक होता है. जब हमने स्टार्टिंग में किसी को वैक्सीन दी है तो दिस विल बी वेरी स्लो. बट जैसे जैसे हम बार बार ये वैक्सीन उसको देते जाएंगे, सो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रांग होता जाएगा. ठीक है. और जब कभी भी सच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाएगा, सो द बॉडी विल शो अ वेरी स्ट्रांग रिस्पॉन्स टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड विल किल इट. ठीक है. यस, ओके. सो वैक्सीन इज गिवन टू द पर्सन, ठीक है, एंड एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड. तो जब हम ड्यूरिंग वैक्सीनेशन क्या होता है, हम वैक्सीन लेते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं. ओके. नाउ आफ्टर वैक्सीनेशन क्या होगा? हाँ, वी हैव टेकन वैक्सीनेशन, नाउ व्हाट विल हैपन इन अ बॉडी? सो अब हम जानते हैं कि वैक्सीन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं. सो एंटीबॉडीज, जब भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा, सो दीज एंटीबॉडीज दे विल किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे विल फाइट विद दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके. एंड दिस रिस्पॉन्स विल इंक्रीज एवरी टाइम विल टेक द वैक्सीन. और जितनी बार भी हम वैक्सीन लेंगे उतनी बार ये इम्यून रिस्पॉन्स उतना स्ट्रॉन्ग. तो इसीलिए आपने देखा होगा पोलियो की वैक्सीन बार बार पिलाई जाती है, isn't it? So that our immune system becomes faster and it becomes stronger, and that is why we are saved from diseases. हम बीमारियों से बचे रहें. We are saved from the diseases. Okay? Now this I already told you, antibiotics, isn't it? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारे फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, हम इनको यूज करते हैं और कुछ मेडिसिन बनाते हैं एंड जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. और सबसे पहले जो फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की थी, दैट वाज पेनिसिलियम. इट वाज यूजिंग द फंगस पेनिसिलियम, और दैट वाज नेम्ड एज पेनिसिलिन. अदर देन दिस वी हैव two examples. One is streptomycin and the oxytetracycline. So these are another examples. So microorganisms have a medicinal use. Okay. Now as I told you, दो तरीके हैं वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. ठीक है. वैक्सीनेशन को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं. और वी नो दैट बहुत सारी डिजीज हैं जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन लेते हैं, यानी प्रायर प्रिपरेशन कर लेते हैं, और वो हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को डिजीजेस से प्रिवेंट रखती हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं. ठीक है. ओके. बिकॉज दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी. तो जब भी हम कोई वैक्सीन लेते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, और वो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करती हैं. ठीक है. सो एंटीजन मीन्स
any foreign substance that starts an immune system, that induces an immune response in the body, that is called an antigen. Okay. हाँ, वैक्सीन जो है बेटा, इट कैन बी वी कैन स्वॉलो इट, यानी हम ओरली ले सकते हैं या हम थ्रू इंजेक्शन ले सकते हैं. ठीक है. ओके. Okay, so let's come to the homework. First of all, you will be making notes of this topic and you will read the page numbers 25 to 28. And if there is any query, any doubt you feel, you can ask, you can send queries to me. Okay? Okay, beta. So that's all for today. Bye everyone.